Then another is the vector. Okay, so what are the vector? Vector is the organism that does not cause disease itself but spread the infection and transmitting pathogens from one host to another. Pathogens, they are the germs causing bacteria or virus, they are causing the disease, but vector, that is a carrier only. Okay, as mosquito, they are the vector, like the house flies, they are the vector. They cause the, basically they transfer the disease pathogens from one to another person. The vector is not causative organism but carrier, that are the carrier of the pathogens. Example, female anopheles mosquito, vector of malaria. ठीक है, मलेरिया का जो, that is a vector of malaria, and plasmodium is a pathogen. Okay, क्या करता है, from the, ऐसे ही it carries the causative agent protozoa. एक when it binds to the infected person, it carries that pathogen and transfer it to the healthy person. Okay, and same, so diseases, these such diseases that spread by the vectors, they are called the vector borne diseases basically. So they are spread by the vectors. So pathogens, they are the vector are the pathogen carriers. Okay, example, dengue is there, malaria, chikungunya, sleeping sickness. Okay, they all are the vector diseases, vector borne diseases basically. Okay, so vector is, you have to understand that vector is like a house fly or mosquito that cause that, they basically they don't cause the disease, they are only carrier of the pathogens. So prevention, you know very well, in the previous classes you also read about it. Prevention, personal hygiene should be maintained, प्रॉपर वॉशिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, ठीक है, वॉशिंग हेयर, हैंड्स रेगुलरली, वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, गंदे कपड़े डालोगे तो भी डिजीज बैक्टीरियल हो जाएंगे. देन वॉश योर हैंड्स बिफोर और आफ्टर मील्स, यू हैव टू बी, जब टॉयलेट गए हो तो भी आपको अपने हैंड्स वॉश करने पड़ेंगे. कवर द माउथ एंड नोज, कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम यू हैव टू कवर इट. ओके, अदरवाइज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैन बी अकर. ओके, then just nowadays we are just wearing a mask on the, due to the coronavirus, you know that is a bronchial disease, respiratory disease. Then keeping the surrounding clean, ये नहीं कि अपना घर साफ करा, no, surrounding should be proper disposal of the waste, sewers. ठीक है, अदरवाइज तो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज, दे ऑब्वियसली दे विल स्प्रेड द डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज. द फूड शुड बी केप्ट कवर्ड, वाटर शुड बी फिल्टर्ड, बॉयल्ड पीना चाहिए, ख़ास तौर पे समर डेज में, और ख़ास तौर पे जो है दैट इज़ इन द रेनी सीजन. तो वाटर जो है उस टाइम में बहुत ही पानी गंदा होता है, तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज उससे हो जाती हैं. केमिकल एजेंट सच एज क्लोरीन की टैबलेट्स हम डाल देते हैं, किल द जर्म्स. गेटिंग वैक्सीनेटेड प्रिवेंट चांसेस ऑफ कंट्रास्टिंग सम डिजीज लाइक पोलियो. सो वैक्सीनेशन जो है, प्रॉपर वैक्सीनेशन जिन डिजीज़ की है, नाउ अ डे वी आर फाइंडिंग द वैक्सीनेशन फॉर द कोरोना वायरस. ओके, सो ऐसे ही वैक्सीनेशन जो है जिनकी है होनी चाहिए. पर्सनल आइटम्स, टॉवल्स, हैंडकरचीफ शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन. एंड वाइल प्रिपेयरिंग फूड, क्लीनिंगनेस, गंदे से खाना नहीं बनाना चाहिए. जब भी व्हेनेवर समवन इज मेकिंग द फूड, सो प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए. डोंट socialize if you have signs of symptoms of infection. ठीक है, so just keep a distance if you have any disease, any communicable disease, ताकि वो घर में या किसी बाहर में किसी और को ना फैल जाए. The use of the antibiotics should be only under the medical prescription. So you should use the antibiotics, antibacterial, antivirus medicines are available in the market, but by the prescription of the doctor. Okay. Try this out, you have to do it by yourself. Okay, some of the amazing facts are given, you have to read it by yourself. Okay, the next topic is the immunization and vaccination. Immunization means just to increase the immunity. Immunity is what?
is the capability of the organism to prevent harmful microbes from entering the body. I'm not able to see properly basically. Okay, yes. Immunization is the capability of the organism. This is the capability of the organism to prevent harmful microbes to enter the body. ठीक है, body harmful microbes like bacteria and virus, they enter in the body and cause diseases. So this immunization is the capability to prevent them to enter in. If they enter, they kill it. Okay, so immune system of the body produce special proteins called the antibodies. They call the antibodies. Antibodies fight with the microbes and they kill them. ठीक है, they are the soldier like. Okay, they control the microbes. We possess antibody against some diseases which can be last in a few months after the birth. The term is inherent immunity. So immunity that is by inborn immunity भी कहा जाता है, inherent भी और inborn immunity it is also called, because by birth, this is by the birth, जैसे ही पैदा होते हो 5-6 महीने बाद वो immunity develop हो जाती है. Vaccine is what? Vaccine is a biological preparation of the weak or dead germs of the particular disease. So vaccine basically they are the weak or dead germs of that same particular disease. Okay, they are weak or dead. बहुत ही weak germs होते हैं, जो dead germs होते हैं जिनको body में enter करा दिया जाता है, and when they enter in the body, introduced in the body through the vaccine, then antibodies prepared in the body and they fight with it. ओके, तो इम्यूनिटी एक तैयार हो जाती है हमारी वैक्सीन के थ्रू. वैक्सीन इज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन. ठीक है, सो दैट इज दैट वीक वैक्सीन कंटेन वीक एंड डेड जर्म्स इंट्रोड्यूस इन द बॉडी टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द प्रोसेस डिवेल्प रेजिस्टेंस इन द बॉडी. तो दैट डिवेल्पिंग द रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी जो है रजिस्ट कर जाती है उन पैथोजन से, उन माइक्रोब से लड़ने के लिए. ठीक है, सो इट कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन थ्रू द वैक्सीनेशन. इफ वी आर दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल. ओके, इनबॉर्न इज अ डिफरेंट एंड दिस इज द आर्टिफिशियली गिवन टू अ पर्सन. When vaccine is injected in orally, some of the polio vaccine, you know that orally, the body produces immune response similar to one produced when the person contracts diseases. So antibodies produced are used in the future as the polio drops. You know that polio की drops orally दी जाती हैं बच्चों को, और उसके बाद क्या होता है, 1-2 दिन उनको फीवर भी होता है. ठीक है, जब कोई भी वैक्सीन बच्चों को लगते हैं तो फीवर होता है, उनको फीवर होता है तो क्योंकि हमारी बॉडी उनसे वीकेंड जर्म से, जो डेड जर्म से जो है माइक्रोब से फाइट कर रही होती है और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही होती है. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम जर्म्स एंटर in our body, so that antibody is already prepared in the body, so they fight with it. The term vaccination and immunization do not mean the same. Vaccination is a physical activity introduce vaccine into the body and through the injections orally. Immunization is a biological response of the body to the vaccine and create antibodies. It means vaccination is only to introduce the vaccine in the body. ठीक है, germs in the body. But immunization means to produce antibody against that disease. Okay, you have to do the chapter up to here. ठीक है, बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो. Only 2 pages left, half of the chapter is left. Okay, in the next class we will finish this chapter. Okay, and we will do the question answer.